Hello and welcome to today's class. Dear students, today I'm going to teach you about the story The Ashes That Made Trees Bloom. It's a story taken from your NCERT textbook, Honeycomb. It's a beautiful story about a humble couple. This story is actually a Japanese story. It's a very popular, very famous story in Japan. You may call it a bedtime story, which is being usually narrated to the small kids during, to make them sleep, right? So this is a story of that particular kind. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. So here three characters are there. A couple is there, a Japanese couple, old, and they are very old, but they're honest and hardworking. Okay, and the third character that you find is the pet dog. They had a dog, they had a pet dog. Okay, the neighbors are troublesome. In this particular video you will also find that means they have some, they have their neighbors also, but the neighbors are not good, they are not cooperative, they are troublesome का मतलब ये होता है कि they create troubles or they create problems for them. Okay, they are not cooperative, वो help करने वाले या मदद करने वाले लोग नहीं हैं. And the dog dies a sad death. Here we will get to know that the death of the dog also, that was very pathetic. Clear? The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. Solace, what's the meaning of solace? Solace means peace, santi. Okay, after after the death, okay, the spirit of the dog started helping his master. Okay, started helping his master, and that is written over this. Clear? So that's the main part of this particular story. The ashes that made trees bloom. एस का मतलब क्या होता है बच्चों? ASH. एस का मतलब होता है खाक. किसी चीज को जलाने के बाद खाक बन जाता है, दैट्स कॉल्ड एस. ब्लूम का मतलब खिलना, BLOOM. ब्लूम मतलब खिलना. ओके, सो द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो खाक जिसने ट्रीज को ग्रो करने में या खिलने में मदद किया. दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट. सो वो एस क्या था? व्हाट वाज दैट एस, फ्रॉम वेयर इट केम, एंड हाउ इट हेल्प्ड द ट्रीज टू grow faster. That is the point to be discussed here. In the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Okay, in the good old days of Daimos. Daimos का meaning यहाँ पर दिया गया है बच्चों. Here you can find Daimos means, in 19th century Japan, wealthy rich landowners were called daimos. Okay, so in the good old days of daimos, ये बहुत पुरानी कहानी है. Okay, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Okay, there lived an old couple, right, and they had a very pretty little dog with them. Having no children, they loved it as though it were a baby. Having no children, they had no son and daughter. Because of that, they loved their pet as if it was their own child. Okay, the old dame made it a cushion of blue crepe, and at the mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. Okay, इसका मतलब ये है कि the old dame means here the couple, the old couple made it a cushion. They made a cushion. Why did they made a cushion? Why did they make a cushion for the pet? They wanted, they loved their pet and wanted him to stay comfortably with them. They had no children. It is already mentioned here. They had no son and daughters. They had no children, so it was their only child. So it was the only thing that they had in their house to love it. Okay, so that's why during the meal time, खाना खाते समय वो उसको एक कुशन बना के रख दिए थे. That's why the dog would come and sit on the cushion as comfortably as a cat. Snug का मतलब होता है comfortably बैठना. Okay, comfortably बैठना. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. यहाँ पे उनका प्यार यहाँ पे झलकता है बच्चों. Here you can guess how much they loved. How much they loved is being mentioned here. The kind people fed the pet with tidbits of fish.
Tidbits means small pieces. Tidbits means what? Small pieces of fish from their own chopstick. वो अपने ही chopstick में, जिस the chopstick which they used to eat the food was being used to feed their pet. Okay, have you seen a person sharing the spoon with his pet? I think we have never seen, or we hardly find such people in the world. Okay, but this good couple, this good dame, they were really very caring and loving, that they used and shared the chopstick with their pet. Clear? And all the boiled rice it wanted. They also fed him boiled rice. Boiled rice is quite costlier, okay, especially in Japan, boiled rice. That's very costlier, और वो हर किसी को परोसा नहीं जाता. It is not served to everybody. Okay, only the special people are being served with boiled rice. But whenever the dog demanded, whenever the Muko demanded, boiled rice, it was served. मतलब इसको दिया गया. It shows that means it was very much loved by the couple. Thus treated, the dumb creature loved its protector like a being with a soul. Okay, so here you see, thus treated. Okay, in this way he was treated. The dumb creature, here the dumb creature, dumb means a person who cannot speak. Dumb means muk, a person who cannot speak. The dumb creature loved its protector like a being with a soul. Okay, means the dog loved his protector, loved his master like a being with a soul. Means we all are a human being, we have a soul, but we all do not behave like human beings. There are only few people who are really, who truly behave like beings in a soul. Okay, right? So in the same way, the little Muko loved his master very much. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O10 to Sama had gone down behind the hills. Okay, इसका मतलब ये है, the old man being a rice farmer, the old man was a rice farmer, he was a farmer. It is written here, he was a farmer, went daily with hoe or spade. हो मतलब जानते हो ना, वो जो मिट्टी खोदने वाला जो होता है, जो फार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड हो. और स्पैड इन टू द फील्ड, ही वुड कैरी हो और स्पैड इन टू द फील्ड एंड गो टू द फील्ड एवरी मॉर्निंग एंड वर्क देयर टिल द इवनिंग. वर्क देयर टिल द इवनिंग. यहाँ पे लिखा है until O10 to Sama. O10 to Sama is the Japanese word for sun. O10 to Sama is the Japanese word for sun. मतलब until the sun goes down, यानी कि सन जब तक नहीं डूबता, सूरज जब तक नहीं डूबता तब तक, means right from morning till evening he worked in the field. Okay, so that shows that this particular dame or this old couple were really hard working. Okay, every day the dog followed him to work. Followed मतलब पीछे पीछे जाना. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. इसका मतलब ये है कि the dog followed his master every day. Okay, but he never harmed the white heron. Heron is a bird. Heron is a small bird that feed on the little insects. That feed on the little insects. Okay, it collects little insects from the grounds and it eats. It's very tiny in size. Okay, so here it is written that he never harmed. He never, मतलब who never harmed? Muko never harmed the little heron that followed the master's footsteps. वो जो हेरोन इसके मास्टर्स का फुटस्टेप में चलता था, और वो मास्टर्स जैसे जैसे चलते जाएगा तो वहीं कीड़े मकोड़े मरते जाएंगे. देन ही वुड पिक अप द दैट insects and he would feed on that. Okay, so he never hurt, he never harmed it. Okay, उसने वो चाहता था वो छोटी सी चिड़िया को उठा के खा सकता था, but he never harmed it. It shows that means Moko is also as good as his masters. Okay, now for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Okay, right? और कभी कभी वो क्या करते थे,
द मास्टर वॉज ऑल्सो वेरी वेरी पेशेंट. पेशेंट मतलब जिसके पास पेशेंस है, सहने की शक्ति है, जो सुन सकता है, दूसरों के दर्द को समझ सकता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ए पेशेंट. ओके, सो everything that had life and often turned up on a sword because to give food to the birds. और वो जानबूझकर कभी कभी क्या करते थे, उस बर्ड्स को खिलाने के लिए, बर्ड्स को इंसेक्ट्स ढूंढ देने के लिए, ही वुड गो एंड स्टैंड ऑन ए सॉर्ड. सॉर्ड मतलब घास में लंबे लंबे जो घास होते हैं ना, ही वुड गो एंड स्टैंड ऑन द सॉर्ड, ताकि वहाँ घास में वो खड़े हो जाएंगे तो वो कीड़े नीचे जो छिपे रहते हैं, दे वुड बी विजिबल टू द लिटिल हेरोन. सो इन दिस वे द master, or this little couple, they helped, they were compassionate towards the birds, towards the living creatures. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. ओके, एक दिन की बात है. क्या हुआ? द डॉग केम रनिंग टू हिम, डॉग दौड़ दौड़ के आया. ही केम रनिंग टू हिज मास्टर, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, पीछे का पैर को दमखम से लगाया और आगे की दो पॉज से ही स्टार्टेड पुलिंग हिज मास्टर. ही स्टार्टेड पुलिंग हिज मास्टर टुवर्ड्स अ स्पॉट. ओके, एक स्पॉट की तरफ उसके मास्टर को खींचने लगा. द ओल्ड मैन at first thought this pet was only playing and did not mind it. In the beginning, शुरुआत में उन्होंने सोचा कि आई थिंक माई पैट वॉन्ट्स टू प्ले विद मी. ओके, एंड ही डिडंट माइंड इट. उसने ज़्यादा ध्यान नहीं, ही डिड नॉट टेक इट सीरियसली. माइंड इट मतलब टेक सीरियसली. ही डिड नॉट माइंड इट. बट द डॉग kept on winning and running to and fro for some minutes. It is written that but the dog, लेकिन उस कुत्ते ने गया, again it came back. Once went to the spot, again it came back. So in this way he made to and fro motion from the spot to his master, from the spot to his master, as if he wanted to he wanted to convey a message to his master. He wanted to show something to his master. वो कुछ दिखाना चाहता था. Okay, then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब उनका मास्टर ने सोचा कि व्हाट्स द थिंग इज दैट, क्या किस लिए बुला रहा है मुझे. एंड ही फॉलोड द डॉग, and when he followed him, the dog went to his spot and then he started scratching over there. He started making scratching, means he started digging the soil. वहाँ के soil को वो खोदने लगा अपने paws से. With the help of his paws he started scratching. Scratching मतलब खोदना और खुजलाना, खोदना. Okay, so he started digging here. इसका मतलब खोदना, right? Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. Okay, thinking it was a buried bit of fish, the old man struck his hoe in the earth, when lo, a pile of gold gleamed before him. और जैसे ही खोदना शुरू किया तो उसने सोचा, द मास्टर थॉट दैट आई थिंक इसको कहीं एक हड्डी मिल गया या कोई मे बी द बोन्स ऑफ द फिश आर लाइंग बेरिड हियर. ओके, तो उसने सोचा कि चलो निकाल देता हूँ, खाएगा इसको. ठीक है. देन व्हेन ही hit the ground with the hoe, clear, when he hit the ground with his spade, okay, and removed the earth from there, then he was surprised to find a pile of gold shining below that. Okay, उसने क्या देखा? The master saw a pile of gold. एक मतलब बहुत सारा सोने की खजाना वहीं पर था. Means lot of gold were there. Clear? Now let us see. This is the picture of the master and the dog. You see how means how much he loved. Thus in an hour the old couple were made rich. अब सोना जिसको मिल जाए, so you know the prices of the gold is going up day by day, isn't? So it's very costly. It's not only in India, it's everywhere, whether it is United States or it is Japan or it is China. Gold has its demand everywhere. Okay, and those who are having a pretty good amount of gold, they are considered to be rich. Clear? They are considered rich. वो उनको rich consider किया जाता है. They are considered rich people. So now within no time, अब सोना मिलते ही इतना सारा सोना मिल गया. They got a pile of gold that the old couple became rich overnight. Okay, within few minutes, within few hours, the old couple turned into rich fellows. The good souls bought a piece of land. अब now let us see how they are going to spend their money. अब पैसे कैसे खर्च करेंगे? पैसे तो आ गए. अब now they have earned lot of money through the gold. Okay, the good souls, it means the good couple, the humble couple,
bought a piece of land, उन्होंने एक ज़मीन खरीदा, made a feast for their friends, made a feast for their friends, अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी उन्होंने आयोजन किया. Feast means party, feast means party, right? And gave plentifully to their poor neighbors, and gave plentifully to their poor neighbors, or plentifully means abundantly, बहुत ज़्यादा उन्होंने, they helped the poor neighbors, ओके उन्होंने अपने सारे नेबर्स को हेल्प किया, राइट. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथड हिम विथ काइंडनेस, ओके उन्होंने अपने पेट को क्या किया, शाबाशी दिया. दे पैटेड हिम अलॉट, दे पैटेड हिम, उन्होंने शाबाशी दिया कि मीन्स यू हैव डन ए गुड जॉब माय सन, यू हैव रियली डन, यू हैव रियली मेड अस प्राउड. दे पैटेड हिम, ओके, राइट. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Now in the same village, उसी गांव पर, उसी उनके घर के बगल में, there lived a wicked old man. Wicked means bad, someone who is bad in nature, जिसका नियत ही खराब होता है, वैसे लोगों को wicked fellows कहते हैं या wicked man कहते हैं. So there lived a wicked man and his wife. दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे. बोलूँ दे वर वेरी नोटोरियस, दे आर वेरी नॉटी, ओके. नॉट अ बीट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, दे नेवर केयर फॉर एनीथिंग, ओके. who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. और वो क्या करते थे, what was their behavior? It is written that whenever any dog or living creature would pass through their house, they would kick and scold it. वो लात मारते थे, they would kick it and they would scold it, गाली देते थे और पीटते थे dogs को या other animals को. Now, okay, now let us see what more is written here. Hearing of their neighbors good luck, okay, उन्होंने सुना कि मतलब उनके नेबर्स का कैसे गुड लक खुल गया, कि मीन्स हाउ दे डिस्कवर्ड ए पाइल ऑफ गोल्ड अंडर द अर्थ and it was found by their means their pet dog. Now they heard about it, they coaxed the dog into their garden. Coaxed मतलब they persuaded, उसको उन्होंने मतलब बहकाया, उस डॉग को, मुक्कू को उन्होंने कुछ खाने पीने का कुछ देकर उसको बहकाया. एंड दे कॉल्ड इट टू देयर गार्डन, उनके गार्डन में बुलाया, ओके. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने में क्या परोसा, दे सेट बिफोर हिम, दे सर्व्ड हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, ओके, और टेस्टी टेस्टी फूड्स भी उसको खाने के लिए दे, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया था किसी भी क्रिएचर्स के लिए, किसी भी डॉग के लिए. एंड सरप्राइजिंगली दैट फेलोज, ओके, दे हैव सडनली बिकम वेरी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल्स, ओके. कितने बदमाश हैं ये लोग, यू कैन जस्ट इमेजिन इट, ओके, राइट. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर दैम, किसके साथ, क्यों ऐसे कर रहे थे, वाई दे हैड स्टार्टेड, वाई दे वर चेंजिंग देयर बिहेवियर, with the hope of that the dog would find a treasure for them also. उन्होंने इसलिए दे रहे थे कि ताकि ये डॉग खाना खाए और वो क्या करे, he should go and find a treasure for them. वो अपने मालिक के लिए जैसे ढूंढा एक ट्रेजर, ठीक उसी तरह एक ट्रेजर ढूंढ के दे. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. But it is not for the first time the dog has come to this family. I think many a times he has passed through this house, okay. और जितने बार भी गया है उनको लात और सिर्फ मतलब गाली खाना पड़ा है. So nothing else he got from this family, okay. But today they are serving him tidbits of bones and tidbits of fish, and they're giving tasty dishes also to the, so that's why he was surprised. But the dog did not take the food, rather it was, okay, rather it was getting afraid of the cruel pair. Cruel pair means वो मतलब निर्दय जो हस्बैंड एंड वाइफ है, निर्दय. क्रूएल मीन्स निर्दय, जो बहुत दुष्ट होते हैं, क्रूएल ऑफ द विकेड पेयर, ओके. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, उन्होंने उसको खींच खींच के ले गए, ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, ओके. टेकिंग ए स्पैड एंड हो विद देम, और एक साथ में व्हाट डिड दे कैरी, दे कैरीड अ हो विद देम, उन्होंने अपने साथ एक हो और स्पैड भी लेके गए कि हम मिट्टी को खोदेंगे, ओके. नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड. जैसे जैसे उन्होंने एक पाइन ट्री के पास आए, ओके, गार्डन के पास आए,
नियर द पाइन ट्री, उसमें एक पाइन ट्री था, राइट। पाइन ट्री अक्सर मतलब हिमालय की पहाड़ियों के अंचल निचली स्थान पे मिलता है पाइन ट्री, ओके। तो ऐसे पाइन ट्री के किनारे में जैसे आए, सो देयर द डॉग स्टार्टेड स्क्रैचिंग द यू नो सॉइल। डॉग ने क्या किया, उसमें स्क्रैच करने लगा। क्लियर, इट मीन्स देयर वॉज समथिंग, क्लियर। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे लगता है कि वहां पे कुछ छिपा हुआ था। देयर वॉज अ ट्रेजर, ओके, देयर वर सम गोल्ड्स और देयर वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइंग बीनीथ, राइट। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो। इसमें क्या कहता है वो विकेट मैन, क्या कहता है, क्विक जल्दी करो, क्विक मीन्स जल्दी करो, वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, मुझे वो हैंड मी मतलब दे दो मुझे, स्पैड एंड हो मुझे दे दो, ताकि आई विल डिग द सॉइल, cried the greedy old fool as he danced with joy. And he was super excited. At the time he felt very excited, because he thought that our job is done and this particular dog has found a treasure for us. So their joys knows no boundary, it was means they were super excited, they were very very excited, and they thought that their life is also going to change. Now, what was there? Now, let us see. Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig, but which was nothing but a dead kitten. When they started digging the soil, my dear children, what was found, when they started digging the soil, they found that there was nothing but a dead kitten. उनको क्या मिला? एक dead kitten मिला. Dead kitten means एक मरा हुआ बिल्ली, एक मरा हुआ बिल्ली मिला. The smell of which made them drop their tools. The smell of which made them drop their tools. Okay, उसके जो बदबू थी ना, that made them, okay, that made them, clear. It was giving a foul smell, and because of the foul smell, they dropped their tools and they moved away, और वो दूर भागे. Furious at the dog, okay, furious at the dog, उस dog के ऊपर गुस्से में आ गई. Means how can he discover such a bad thing for us? The old man kicked and beat him to death. और उन्होंने क्या किया, उसको मारा, बहुत मारा. They kicked him and lashed him till it died. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head. और उस old woman इतनी दुष्ट थी, इतनी दुष्ट, she was so notorious, she was so bad that she killed the dog. She killed the dog by chopping off his head. उसका गला काट दिया उसने. With the sharp hoe, then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, carcass means dead body. Then they flung him into the hole, जिस मिट्टी को उन्होंने खोदा था, so there was a hole was created there, so उसी गड्ढे में they flung him, okay, उसको bury कर दिया. They buried him in that soil and covered it with the earth. Clear. उसके ऊपर मिट्टी उन्होंने देकर बंद कर दिया. Clear. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. अब क्या होता है, जब ये खबर मिली, when this news was heard by the owner of the pet, okay, जब उसको पता चला ओनर को, then they mourn for it, okay, as if they have missed their own child, as if they have lost their own child. जैसे कि अपने खुद के बच्चे मर जाने से या कुछ होने से जैसे हम लोग दुखी होते हैं ना, ठीक, just like that the old couple, they mourned on the death of the pet. Went at night under the pine tree, और pine tree के नीचे में जाके रात भर वहीं बिताए. He set up some bamboo tubes in the ground, okay, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burnt several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if ही वर अलाइव. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे वहाँ की ट्रेडिशंस है कि बच्चों जब कोई मर जाता है तो कब्रस्थान में क्या किया जाता है, उसके ऊपर मतलब बैम्बू के टोम बनाया जाता है, फिर उसमें फ्लावर्स देते हैं, खाना देते हैं, एंड दे डेकोरेट द टोम. सो इन द सेम वे they started decorating the tomb with the help of the bamboo tubes, with the help of the bamboo, and they also burned incense sticks, okay. इंसेंस स्टिक, जो बेटा आप देखे होंगे ना, इंसेंस स्टिक घर में जो लगाते हैं ना, अगरबत्ती बहुत महंगी महंगी अगरबत्ती जलाई, ताकि
द डेड बॉडी इज बिंग कंफर्टेड, ताकि उनको अच्छा लगे, उनकी जान को अच्छा लगे. ओके, एंड पूरे पूरे सम्मान के साथ उसके उन्होंने उस जगह को उन्होंने बहुत सुंदर से डेकोरेट किया. राइट. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared टू हिम, और उसी दिन उसी रात को क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared टू हिम इन ए ड्रीम. एक सपने में आया उसका स्पिरिट, और क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव. ये जो पाइन ट्री आप देख रहे हो ओवर माई ग्रेव, मेरे ग्रेव के ऊपर, कट इट डाउन, उसको काट दो. एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर, और इससे क्या करो, एक मोटर बनाओ. राइट. फॉर योर राइस पेस्ट्री. मोटर मतलब जहाँ पे कूटते हैं ना बेटा. ओके. जहाँ पे कुछ हम लोग जो मसाला वसाला कूटते हैं, ऐसी चीज़ को मोटर कहते हैं. राइट. ओके. एंड मेक ए मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, और क्या करो तुम अपने राइस पेस्ट्री के लिए, ओके, उसके लिए मोटर बनाओ. एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस. तो दो चीज़ें वो बनाने के लिए कहा पाइन ट्री से. क्या क्या, फर्स्ट वन, कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक अ मोटर फ्रॉम इट एंड मेक ए बीन सॉस फॉर दिट. ओके. नाउ अब देखो ये सपने में तो आ गया. नाउ दिस फेलो इज स्लीपिंग यू. ओके, ये सोए हैं, और ये डॉग भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना. क्लियर. सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. और उसने क्या किया, चॉप्ड डाउन मीन्स ही कट डाउन द ट्री. उसने जैसे कहा था उसके डॉग ने सपने में, he followed the instructions and he went to the tree next day and he cut it down and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. और बीच में से सेक्शन, बीच में से एक सेक्शन निकाला, ए पार्ट ऑफ दैट सेक्शन मीन्स ए पार्ट, 2 feet लॉन्ग पार्ट एक उसका ट्रंक से निकाले. ओके. विथ ग्रेट लेबर, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. और उससे क्या किए, उसको मतलब चीजल, चीजल मीन्स वो हथियार जो होता है ना, औजार जो होते हैं, some tools that are being used, okay, by the carpenters, that is called a chisel. Okay. with the partly by fire, partly by chisel, कुछ चीज़ों को फायर से, कुछ चीज़ों को चीजल से. he scraped means he made, scraped का मतलब made, digged. okay, he digged out a hollow place. उसमें क्या किया, एक होलो प्लेस बनाई, जैसे कि बाउल होता है ना, एक बाउल की तरह जहाँ पे कूटेंगे. राइट. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड. फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने बाउल जैसे बनाया, फिर कूटने के लिए एक हैमर जैसा चीज़ भी बनाया. ही मेड ए हैमर ऑफ द वुड सच एज is used for pounding rice. Why he made a bowl and a handle like structure, so that he would hammer the so that he would pound the rice, he would make the rice pastry. Okay, he would make rice powder for the rice pastry. पेस्ट्री बनाने के लिए, राइस पेस्ट्री बनाने के लिए राइस को पाउडर करना पड़ेगा. ही हैज़ टू पाउंड इट. राइट. when न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर का समय आ रहा था, इट वॉज द टाइम ऑफ न्यू ईयर, he wished to make some rice pastry. वो क्या करना चाहा, the old couple they wanted to make some rice pastry. when the rice was boiled, granny put it into the mortar. जब राइस पूरे बॉयल हो गया, पहले राइस पेस्ट्री बनाने से पहले क्या किया जाता है, पहले चावल को कूटा जाता है. कैसे कूटते हैं, फर्स्ट इट इज़ बॉयल्ड, पहले बॉयल किया, हल्का किया जाता है, सो दैट इट वुड पाउंड इजिली, इट वुड गेट पाउंडेड इजिली, इट कैन बी क्रस्ड इजिली. राइट. एंड देन इट वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द मोटर, मोटर में ट्रांसफर कर दिया गया. एंड ग्रैनी स्टार्टेड पाउंडिंग इट इनटू डो. उसने उसको कूट कूट के ही मेड ए डो आउट ऑफ इट. उससे क्या बनाया, डो बनाया. राउट. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट till the pastry was all ready for baking. And that mortar, that particular mortar that they made out of the pine tree was so hard and so good that with in no time they could make the pastry, or their dough was ready, their that thing was ready. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. और उसने जब राइस पेस्ट्री के लिए जब डो बनाया, ओके, एंड जब उसको कूटने लगा, at that moment another magic thing took place. Another magic moment came here. Okay, and they were all surprised to find that, see that what was that. When they started pounding the dough, it suddenly converted or turned into a heap of gold coins. वो क्या हो गया, gold coins बन गया. वो राइस पेस्ट्री जो था वो क्या बन गया, the dough of the rice, okay, turned into gold coins. Okay. और देखो, when the old woman took the hand mill
and filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. और उसमें जो ओल्ड मैन ने क्या किया, जब वो हैंड मिल लेकर ओके ही फिल्ड इट विद द बीन्स, और उसको बीन्स उसमें फिल किया और उसको ग्राइंड करने की कोशिश की. when she started you know hitting it hard and tried to grind it, उसको कुटने की कोशिश की, then the gold began to drop, the gold coins begin to drop down. तब उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे कुट रही थी, then from the beans they were coming out small small gold coins for them. Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Okay, और इसी दौरान उनके जो पड़ोसी थी, she was peeping मतलब झांकना, किसी छोटे से किसी छेद से देखना, मतलब वो अपने घर से थी, अपने घर पर ही थी, एंड शी वॉज ट्राइंग टू पीप आउट. ओके, वो देख रही थी, झांक रही थी. ओके, सो थ्रू अ स्मॉल विंडो आई थिंक शी पिप्ड ऑल दिस थिंग्स एंड शी सॉ दैट द डो, द राइस डो and the beans have converted into, she could see them getting converted into gold coins. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. Or within no time, the entire beans and the entire rice pastry dough that got converted into a mass of gold, lot of golds. Okay, so the old couple were rich again. फिर से ये लोग बहुत rich बन गए. Okay, because they were so kind, they were so humble, because they were so good that the dog also started helping them, you see. So the old couple were rich again. The next day the stingy means miserly, मतलब बहुत miserly, मतलब जो लालची होते हैं, लालची मीन्स उसको miserly कहते हैं. The stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. और उसको अगले दिन उस लेडी देख रही थी सब कुछ, she had seen everything. Okay, she had witnessed everything. So next day she came to her neighbor's house and she borrowed it. और उसने कहा कि वो हमें आपका वो मोटर और थोड़ा हैंड मिल दे दीजिए. वी ऑल्सो वांट टू मेक व्हाट राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस. ओके, दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. उन्होंने घर भी लिया, घर लेकर उन्होंने भी वैसा ही किया. दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस, वो मोटर में क्या किए, दे पुट द बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद द बीन्स, और हैंड मिल पर बीन्स रख के उसको कूटने लगे. देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन बिगन टू ग्राइंड. अब ओल्ड मैन राइस को पाउंडिंग कर रहा था. ही वॉज मीन्स ट्राइंग टू पाउंड इट इन द मोटर, और जबकि ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू ग्राइंड द बीन सॉस इन द हैंड मिल. नाउ लेट अस सी क्या होने वाला है. आर दे गोइंग टू गेट द गोल्ड कॉइन्स लाइक द ओल्ड कपल? लेट अस सी. बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस turned into a foul mass of worms. और जैसे ही पहला उन्होंने कूटा, द फर्स्ट ब्लो उन्होंने जैसे मारा, जैसे ही पहली बार उन्होंने कूटा उसको, what happened, the rice pastry and the bean got converted into, it turned into a foul mass of worms. Foul means bad smell coming. Okay, mass of worms, वहाँ कीड़े निकलने लगे. ओके, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. ओके, एक कूटता है तो वहाँ सोना निकलता है, तो दूसरा कूटता है तो वहीं पर क्या होता है, वर्म्स निकलता है. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर. तो इसलिए बच्चों, हमारे जो नीयत होनी चाहिए, हमारी जो कैरेक्टर होनी चाहिए, हमारी जो बिहेव या नेचर, दैट शुड बी ऑलवेज अपराइट एंड वी शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. ओके, क्योंकि भगवान या कोई भी हो, they help us indirectly. Okay, here the old couple, the poor couple, they were getting rich day by day. They were helped by the spirit of the dog, they were helped by the dog. But the wicked couple, they were getting punishment one after another, one after another. पहले तो उनको क्या मिला? Okay, for first they found a dead kitten, and now they have got small worms coming out of the rice pastry. Okay, so it is unbelievable for them. Still more angry at this, they chopped the meal into the pieces to use as firewood. अब इतने गुस्से में आ गए, they got furious. They became furious. They got so much angry that what they did. They chopped the meal. उन्होंने वो hand mill को और उस मोटर को they chopped it into pieces. उसको लकड़ी को तोड़ दिए, काट दिए, and burn it as firewood and use it as firewood. उसको क्या किए, फायरवुड की तरह, यानी कि घर में खाना बना लिया उसी से. Clear? Now, with this, we have come to the
end of the first part of this chapter, dear students. Okay, in my next video I'll try to discuss with you the second part of the story. Okay, till then, have a good day.